Hello guys, welcome back to our Java Complete course and this is chapter number 22 operator precedence. बहुत ही छोटा सा वीडियो को जल्दी से इस पे डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, राइट, लास्ट वीडियो में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात किया था. सिंस हियर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स इन बिटवीन, सो अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशंस फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. तो वो कह सकता है कि बेसिकली दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करता है कि कौन से ऑपरेशंस पहले परफॉर्म किए जाएंगे इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, सो इन दिस एक्सप्रेशन यू कैन से कि भाई 8 + 4 12 हो गया एंड देन 12 × 3 36 हो गया. बट दैट इज नॉट द केस इन दिस. इज एक्चुअली 4 × 12 पहले इवैल्यूएट होगा, तो 4 × 12 क्या हो जाएगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 बन जाएगा एंड देन 12 + 8 20 बन जाएगा. तो इसका फाइनल आंसर 20 आएगा. बट व्हाट इज दिस रूल, राइट, ये रूल क्या है? तो इसको BODMAS और PEMDAS रूल भी कहते हैं. BODMAS मतलब इट्स बेसिकली इट्स क्वाइट यूज्ड इन आवर कंट्री एंड दिस रूल बेसिकली स्पेसिफाइज पहले ब्रैकेट्स वाले, देन ऑर्डर्स मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली एक्सपोनेंट, राइट. तो इफ यू राइट लाइक दिस 2 exponent 4, so basically this is 2 × 2 × 2 × 2. So this is basically the exponent thing and it's also called as orders. Then division, multiplication and then addition, subtraction. Same goes with PEMDAS rules also. PEMDAS में मतलब बेसिकली सबसे पहले प्रायोरिटी होती है पैरेंथेसिस की, then exponents is this thing only, ignore, and then addition and subtraction. Okay, so this is what PEMDAS rule means, which is PEMDAS and BODMAS. Now let's see. Okay, so this rule basically ये बताते हैं कि कौन से ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होंगे बिफोर अदर्स. सो जनरल ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है पैरेंथेसिस का. सो ऑपरेशंस इनसाइड दिस पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट, and then multiplication, division and modulus are second. They have higher precedence than addition, subtraction. And if you talk about addition, subtraction, these are evaluated last. But अगर ये parenthesis में होंगे तो इन्हें आपको पहले evaluate करना पड़ेगा. Okay. Now given this rule, we can talk about this thing. So basically 8 + 4 × 3 दे रखा अपन को, right? तो इसमें से अगर अपन उठाए तो पहला प्रेसिडेंस ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन का, राइट. तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ पहले हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 4 × 3 12. Okay. And then 8 + 12, right? 12 + 8 is 20 and this finally 20 is what is assigned to the primitive type R primitive type result here. We can also do things like अगर मेरे को चाहता था कि मैं 8 + 4 को पहले इवैल्यूएट करूँ, तो मैं ये करना अपन इसको बस पैरेंथेसिस में डाल देंगे, तो वो अपना ऑर्डर एज पर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस और जनरल ऑर्डर द पैरेंथेसिस विल और द ऑपरेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट. तो इफ आई डू दिस देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, सो ये हो जाएगा अपना 12 and then it will be multiplied by 3, so this will become 36 and this 36 is finally assigned to the result variable. Okay, so this was about that. And then we saw that the parenthesis has the highest precedence and it overrides the default precedence. There are some examples here. Let's see if we can solve it or not. So first is अगर 6 को 20 - 4 + 6 divided by 12, तो division का पहला precedence होता है, right? So 6 divided by 2 is 3. Okay, so this is done. And then it is replaced by 3 here. Then we have 20 - 4 + 3. तो अब इसको ऐसा 20 - 4 is 16, right? So this is done. So this will be replaced by 16. And then plus this 16 + 3 is 90. तो इसका आंसर आएगा 90. If we talk about this, इसमें parenthesis वाला पहले होगा, तो parenthesis में if I go inside, तो ये सारे माइनस और प्लस सेम ही है, तो it doesn't matter. So we can do 20 - 4 is 16, right? And then plus 6. So this will become 22 and then 22 divided by this entire thing is evaluated at 22. 22 divided by 2 is 11 and then result is assigned to the value 11. Let's so see this. तो basically अपन इसको मैं कहता हूँ बस ज़्यादा कुछ नहीं करना अपन को, इस पे बस इसको मैं कॉपी कर देना and let's see if it is working the same way we thought or not. ठीक है, so let's print this and result. तो ये अपना 19 आना चाहिए. Right, so this is 19 and then we said कि if I do result is equal to, इसको मैं कॉपी कर लूँ, इसको यहाँ पर डाल दूँ, but I wrap these guys into the parenthesis. तो और parenthesis वाले हमेशा पहले इवैल्यूएट होते हैं. इस केस में आ जाएगा 20 - 4 16 + 16 22. So this is replaced by 22 and then 22 divided by 2 is 11. So let's see. So 19 and 11 should be our output. Okay, and that is the case. So this is very small video around the operator precedence. In next video, we'll talk about more stuff on Java. See you soon. Bye guys.